Hi everyone, welcome back to my channel and if you're watching this on 25th December then happy Christmas. इस साल का क्रिसमस का व्लॉग है nothing big, just a small simple video of how we spent our Christmas or are going to spend our Christmas because this was taken a day before it. But you are obviously seeing this on 25th. तो एक दिन पहले 2 दिन पहले से माई फादर वॉज पुशिंग मी टू स्टार्ट डेकोरेटिंग द हाउस जस्ट टू क्रिएट दैट मूड एक तो इतनी ठंड है उसमें कुछ करने का मन नहीं करता नहीं इज़ लाइक जस्ट क्रिएट दैट मूड जस्ट स्टार्ट डेकोरेटिंग. तो पिछले साल हमारे पास जो ग्रैंड मैसिव ट्री था वो र्यून हो गया वाइल्ड शिफ्टिंग. सो वी वर लाइक what are we gonna do? तो my dad was like whatever guys things you have the decorative items उससे हम कुछ ना कुछ बना लेंगे. He is a little creative in that sense, so it's like let's do something, let's not be sad कि इस साल because there's no celebrations apparently happening, so let's do something out of it. And by the way, that's my grandfather who looked like a Santa Claus himself, so we did that. तो दिस वॉज माई आइडिया कि हमारे जो फ्रंट डोर है उसमें हम क्रिसमस ट्री वाला वो पूरा वो साइन ऐसे फिगर बना लेते हैं विथ these things that we had and it looked kind of good. So my father, me and my brother did this work and घर के हर जगह पे जो जो चीज़ हमारे पास मिल रहा था whatever we had we made use of it to max. तो अच्छा लगा ये कर it always brings a lot of nostalgic memories that you have with associated with Christmas. पहले क्या होता था पूरा चर्च साथ में आता था, हम practice sections करते थे. You must have seen my older Christmas vlogs. If you haven't, please go. I'll put that in the description along because it's really wonderful. चर्च में celebrations होते थे, dance practices होता था. I have made a huge vlog on that. I think the last Christmas we've had, the best one was 2019 का, before all of this COVID thing came up. दैट वॉज द बेस्ट क्रिसमस ऑफ आवर लाइफ. इतना मज़े किए हमने. उसका व्लॉग है, मैं ज़रूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगी. तो इस बार वो सब नहीं होने वाला है. इट विल टेक सम टाइम टू गेट बैक टू दैट स्टेट अगेन, बट वट एवर वी हैव वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ दैट. Merry Christmas to all of you. I wanted to do something different this time since this Christmas is at this place, our new place. Last Christmas was in our old house. I really miss that wala vibe, but ये वाला vibe भी चलता है because we have a star and all. And this time we are going very low key with our Christmas. There's not gonna be any celebration even in church. We sort of cancelled it, and so I'm a little sad about that. But Christmas is just more than the lights and the trees and all that we put up, and the decorations, the cakes, the Santa Claus, everything is fine. The merry spirit is fine, but Christmas is about Jesus Christ, his love for you, me and the world, the reason why he came to this world, and the reason why he resurrected, and the reason why he will come back. That is Christmas. That is the real Christmas spirit. That is the real Christmas message. So I hope this Christmas you realize the love of Christ, because that is important. It is beyond religion. It transcends religion barrier. Okay, so this is not a celebration of Christians. It is a celebration of for the whole of mankind. Okay, because somebody as awesome as him came down to this earth for us, for you and for me. Okay, so this was a little Christmas vlog. Nothing extravagance, nothing glitz and glamour. Simple, short, sweet. I hope this year, the coming year, will be even more better for all of us. May we be able to face our obstacles with more merriness and joy in our hearts, and may we always be grateful for what we have. बहुत ठंड है यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं बता नहीं सकती हूँ. तो 4-5 दिन से कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, ना बिस्तर से उठने का, ना कुछ करने का. आई नो ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस, द काइंड ऑफ आई मीन मैं कहाँ से शुरू करी थी, मैं कहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, बट ठंड इतनी ज़्यादा है, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है. So thank you for watching this vlog. I hope you love it. We are really close to 400 subscribers. 2 लोग और बाकी हैं I guess. जो भी हो यार, प्लीज़ 2 लोगों को जलाओ, सब्सक्राइब करवाओ, so that before this year ends we can be a family of 400 subscribers. I will be very happy about it, and I will do a special vlog for that as well.
सो लेट्स डू दिस. कुछ दिन और बचे हैं इस साल को ख़त्म होने के लिए. I'll say be grateful for what you have, do things that you couldn't do the whole year, and most importantly, be happy. That is more important, you know. Because year end में लोग थोड़े पागल से हो जाते, भौखला जाते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, कहाँ जाए, कहाँ घूमे, किससे मिले, किससे बात बनाए, you know. Don't do too much, okay. Be happy, do what your heart wants, tell yourself some kind words, nice words, spend time with your family, and most importantly spend time with yourself. That is more important, okay, so that you can have a more fresher year, so that you can be ready to face a new year, new challenges, new battles by yourself, right. सो रिट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप में देखो क्या है, क्या किया मैंने एक साल, क्या मुझ में कमी है, क्या मैं अच्छा बन सकता हूँ, और कैन आई बी अ बेटर ह्यूमन, बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. एंड मेरे फ़ोन का लैगिंग ख़त्म हो गया. इससे ज़्यादा खुशी मुझे किसी बात का नहीं है. पहले ये था कि हर 5 सेकेंड में ये लैग होता था. थैंक यू फेबिन भैया फॉर फिक्सिंग दिस वन. दिस रियली हेल्प मी अ लॉट. दिस इज़ द मेन रीज़न वाई आई वॉज हेजिटेटिंग टू व्लॉग, बिकॉज क्या करें जब देखो ये लैग होता था. बट अब मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं किधर भी करूँ लैग नहीं होता. सो दिस वॉज माई लिटिल क्रिसमस व्लॉग. हैप्पी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू, एंड मे Jesus live in your hearts. May he come to your home, may he make you happy, because trust me, more than the lights, more than the Christmas trees, more than this whole Christmas extravagance, this whole character that the world thinks Christmas is about, it's at the end of the day, it's about Jesus Christ. So may he come to you, may he touch you, may he love you, and may you know him. That is more important. Okay, happy Christmas, God bless you all, and cannot wait to end this year on a good note. May we all be healthy, and please take care of yourself. अभी बहुत लोग की तबीयत ख़राब हो रही है, so please take care of yourself very well. Drink warm water, and wherever you are, say a little pray for me and my family. I will do the same for you. Thank you. God bless you all. Bye bye.